Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें वाइब्रेशन ऑफ लीनियर सिमेट्रिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ए विषय रे पढिबा. So for this purpose, obviously, we have to consider a molecule of the type YX2. For example, carbon dioxide. Okay, जोटा एठी फिगर तमे देखिया को पाउचो. So एठी end atoms दुईटा एटा समान atom नौचो हमें X. Suppose यार mass है small m. आउ middle बा central atom टा हिगला Y having mass capital M. Now we further assume that there exists an elastic bond between the central and end atoms. ओके जार कि फोर्स कांस्टेंट ये जो इलास्टिक स्प्रिंग्स भाया देखा पाच फोर्स कांस्टेंट आम नहीं स्मॉल के राइट. अच्छा तापरे आम कहवा डिस्प्लेसमेंट जो होची एटम्स रो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन ताकू डिनोट करबा बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दैट इज q1 q2 एंड q3. ओके ताले एबे काइनेटिक एनर्जी को आम लिखि परिबा t इक्वल टू हाफ m एटा एंड एटम्स पाई q1 डॉट स्क्वायर प्लस q3 डॉट स्क्वायर और एटा सेंट्रल एटम पाई हाफ कैपिटल M q2 डॉट स्क्वायर. ओके अकॉर्डिंगली आम पाईगला इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स यदि लिखा 2t इक्वल टू q1 डॉट q2 डॉट q3 डॉट एटा रो रे अच्छी तापरे एठी हमर मैट्रिक्स आछि 3x3 रे जो थे कि खाली डायगोनाली आम मास को रखुचु स्मॉल m कैपिटल M एंड स्मॉल m बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब जीरो अच्छी राइट. तापर रोचे आमर कॉलम मैट्रिक्स. ओके या सॉल्व कले भी तुम एतिकी ही पाइबो देखिबो. ओके सो दिस विल गिव राइज टू मैट्रिक्स दैट इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज t इन टर्म्स ऑफ ith एंड jth कंपोनेंट जदि आम या भाया लिखि परिबा. ओके सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जदि देखिबा then it is given as half k q2 minus q1 square plus half k q3 minus q2 square. okay so एठी कॉमन रहउची देखो q2 दुईटा जाक टर्म रे माने सेंट्रल एटम रो डिस्प्लेसमेंट. ओके ताले याकू एबे टिके जदि आमे सॉल्व करूचू आमे एतिकी पाइबा from which 2v equal to again मैट्रिक्स फॉर्म रे एटा रो मैट्रिक्स एटा कॉलम मैट्रिक्स और एटा हमरो 3x3 मैट्रिक्स. नाउ यू सी एबे यही मैट्रिक्सटा को भाई भाव में आसके तुमको मन रखा हम. ओके सॉल्व कले भी तुम एतिकी रिजल्ट ही पाइब. ओके सो देख यू आम पोटेंशियल एनर्जी v मैट्रिक्स पाउछु व्हिच इज vij दिस मच राइट. एबे आम सेकुलर इक्वेशन रे याकू पुट करबा. ओके सेकुलर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच द डिटरमिनेंट ऑफ v माइनस ओमेगा स्क्वायर t should be equal to 0. respective values put kala. Now we have to solve this determinant accordingly. After solving you will get three numbers of omega values which is the angular frequency. okay so eta gote cubic equation asila जो थ्री को आमे गोटे पाउछु ओमेगा 1 इक्वल टू 0 ओमेगा 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k by m and omega 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k by m into 1 plus 2 small m by capital M. so ये तीन टा हिगला नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. ओके नाउ एटी फर्स्ट केस को लक्ष्य करो ओमेगा 1 इक्वल टू 0. so this refers to translatory motion of the atoms and the rest 2 refers to oscillatory motion. so in order to calculate the corresponding normal coordinates जदि आम या कहला नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को जोटा लास्ट क्लास रे देखुतिला आम सिंबल हेगला इटा. so तीनटा अछि आमर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या तीन टा ही नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स रहिबो. ओके सिंगल फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल कोऑर्डिनेट. सो इटा 1 इटा 2 एंड इटा 3. ताले आमे एबे कोन करबा
नॉर्मल कोऑर्डिनेट को ओल्ड कोऑर्डिनेट द्वारा लिंकेज करबा बाय यूजिंग दिस रिलेशन व्हिच इज qj इक्वल टू समेशन ओवर k aj k इटा k ओके या को कॉलम मैट्रिक्स रे हमें लिखि देला ओके q आउ इटा को aj जो अछि एटा होछि गोटे 3x3 मैट्रिक्स एटा हमको बाहर करिवार अछि ओके सो the problem now is to calculate the components of the eigenvectors a1 a2 a3 ये जो eigenvectors a1 a2 a3 माने कोन एटा देखो बोल्ड हे की अछि ओके सो a1 कहले हमें एई फर्स्ट कॉलम को बुझिबा a2 कहले एटा को बुझिबा and a3 is this much okay this one is a1 this one a2 and this one is a3 okay column matrix so हमें एबे फर्स्ट केस डिस्कस करिबा दैट इज ओमेगा 1 इक्वल टू 0 या पई a1 हमें बाहर करिबा ओके a1 a2 a3 सब बाहरिबो तबे फर्स्ट केस होची ओमेगा 1 इक्वल टू 0 सो एठी पई जेमति कहली कैलकुलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज a11 a21 एंड a31 ऑफ द आइजन वेक्टर a1 एटा हमें बाहर करिबा सो वी अप्लाई द रिलेशन जोटा की हमरो सेही सेकुलर इक्वेशन जो डिटरमिनेंट थिला ताको एबे हमें जदी समेशन रे लिखुछु ताले समेशन ओवर जे bij minus omega square tij into aj equal to 0 where I equal to 1 2 3 हैला now equation 3 रो we can write for the values of a1 रो वैल्यू देखो इक्वेशन 3 को जिबा इक्वेशन 3 गला देखो एठी ऊपर ओके ए थ्रू हियर फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट ए थ्रू हमें a1 वैल्यू पाई लिखि परिबा देखो लाइक दिस ओके एटा आसिला इक्वेशन 3 रो देन एठी aj जो अछि राइट ताले एटा होची a1 ओके a1 बिकॉज j इक्वल टू हमें 1 नोचो ए जगह रे ओके सो एटा आसिला 0 बाय यूजिंग दिस रिलेशन आकु हमें याकू सॉल्व करिबा बाय पुटिंग ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 ताले रिड्यूस करिगला हमर मैट्रिक्स टा एबे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिबा द्वारा we are getting 3 equations ओके तीनटा इक्वेशन पाउछु हमें जो 3 को तमे पाइबो a11 equal to a21 equal to a31 equal to अल्फा माने तीनटा जाको कंपोनेंट समान होजे सपोज अल्फा ताले हमरो जो वेक्टर थिला a1 वेक्टर दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स अल्फा 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 समान तीनटा जाको टर्म that means it is showing us that the displacement of all the atoms are in the same direction गोटे डायरेक्शन रे तीनटा जाको एटम रो डिस्प्लेसमेंट होउची आइदर लेफ्ट हो किबा राइट हो ओके सो let us now deal with the second case जो थरे की फ्रीक्वेंसी एबे थिला omega 2 and we calculate the components again a12 a22 a32 of the eigenvector now a2 okay so for this purpose we can write again say equation ru हमें पाइला केवल एठी a vector जगह रे एठी a2 vector हमें लगेबा आ ओमेगा जगह रे ओमेगा 2 लगाउछु ओके तापरे एबे पुट करिबा ओमेगा 2 रो वैल्यू so here a22 is equal to 0 and a12 equal to minus a32 equal to beta एटा आसीबो ओके एटा सॉल्व कला परे जते बेले तमे ओमेगा 2 रो वैल्यू पुट करिवो आ आकु सॉल्व करिवो ताले एई रिजल्ट तमे पाइबो ओके सो द कंपोनेंट्स ऑफ a2 कैन बी रिटन लाइक दिस दैट इज a2 equal to beta 0 minus beta okay similarly for the third case that is omega 3 which value is square root of k by m into 1 plus 2m by capital M component हमें एबे आइजन वेक्टर a3 रो पाई परिबा by putting omega 3 square equal to this much and solving further this matrix equation we are having these three equation ए तीनटा इक्वेशन रो हमें accordingly पाउछु देखो components a13 आउ a33 दुइटा समान हेबो सपोज इट इज गामा आउ a23 रो वैल्यू तमे पाइबो -2m by capital M a13 here multiply हिची या सहित okay that means -2m by capital M into gamma okay so the components of a3 will be this much एटा हमें पाइगला
तीनटा जाक ए वेक्टर आम पाईगला सो इक्वेशन 6 7 and 8 will define the required components of the eigenvectors, that is if alpha beta gamma are known, okay, alpha beta gamma रो value हमको जानिबार अछि, if the values are known for which we apply the following orthogonality condition, that is A transpose TA equal to I हेगला identity matrix, okay, so एठी AIJ total matrix को eigenvector रो आमे लिखि देला, एटा होची फर्स्ट कॉलम टा हैला A1 सेकंड कॉलम हैला A2 थर्ड कॉलम हेगला A3 TIJ accordingly आमे जानिचो एटा होची तार मैट्रिक्स टा। अच्छा नाउ इक्वेशन 9 को एबे आमे लिखिबा ए हिसाब रे प्रथमे देखो एई मैट्रिक्स आमे पाउचो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, ओके तापरे एटा आसिला T मैट्रिक्स आ एटा आसिला A मैट्रिक्स, दिस शुड बी इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थरे की डायगोनल एलिमेंट सब 1 अछि, ओके तापरे आमे याकू सॉल्व करिबा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अछि, ओके एटा तमे तो जानि परिबो। सो देखो आफ्टर सॉल्विंग तमे चेक करिबो सबु जेते ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हे जिवो, ओके जोटा की मैच करिवो आरएचएस सहित ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब 0 डायगोनल रे नॉन जीरो आसीबो जोटा की हेबो तार वैल्यू 1 1 एंड 1, ओके दैट मीन्स अल्फा बीटा और गामा रो इजीली हमें वैल्यू पाई गला, ओके आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 7 एंड 8 जोटा की रेस्पेक्टिवली थिला A1 A2 और A3 रो value and also equation 10 with equation 5 we can write now the normal coordinates, that is eta 1 eta 2 and eta 3 which are associated with the normal frequency omega 1 omega 2 and omega 3 respectively। so एबे हमरो जो q बा old coordinate को हमें लेखुतला in terms of new coordinates से इक्वेशन रे हमें पुट करिबा। सो एटा देखो एटा होची ओल्ड कोऑर्डिनेट ताको मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिला, एटा न्यू कोऑर्डिनेट तापरे एठी जो हमरो वैल्यू गुडा पाइछु, ओके ए आई जे रो वैल्यू जो पाइछु एटा हला फर्स्ट कॉलम जेमति कहली दिस इज A1 दिस इज A2 दिस इज A3, ओके सो दिस completes the total discussion, okay now it can be seen that in case 2 रे with omega 2, ओके फर्स्ट तो ओमेगा 1 पाई हमें देखिला जे तीनटा जाक मॉलिक्यूल गोटे डायरेक्शन रे तार मूवमेंट देखौची, ओके सेम डायरेक्शन एमती भी हे पारे किबा ए आडे गोटे डायरेक्शन रे ए भलिया भी हे पारे, राइट नाउ केस 2 रे विथ ओमेगा 2 हमें पाउछु A22 इक्वल टू 0 और A12 इक्वल टू -A32, दैट मीन्स द सेंट्रल एटम will be at rest, okay it will not take part in the motion and the end atoms will oscillate with equal amplitude but in opposite phase, that means in opposite directions। so ये हला case 2। एबे देखिबा case 3 with the normal frequency omega 3 आमे पाइला A13 equal to A33 which is equal to gamma और A23 रो वैल्यू आमे पाउछु equal to -2m by capital M into gamma, that means here this is indicating that the end atoms are moving or vibrating in the same phase with equal amplitude, whereas central atom जदि देखिबो यार vibration होउची in the opposite phase with a different amplitude टा एठी अलगा आसुची, okay now since in case 3 the molecule is asymmetrically stretched, okay because अलगा अलगा amplitude हे गला, so stretching एठी asymmetrical हे गला, so the oscillating dipole moment will be associated with the motion and the corresponding absorption band will appear in the infrared region, okay so up to this I have taken the vibration of linear symmetric triatomic molecule from one book, now this you can see which I have taken from another book, तमे एथरु भी पढ़ी पारिबो किछटा यूजफुल पॉइंट्स जोटा तुमको ठीक लागिबो, you can mix it up and make your note accordingly, okay thank you।